हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने इस ईयर में अपने एडवांस टैक्स की सभी इंस्टॉलमेंट टाइमली डिपॉजिट की है? क्या आपको एडवांस टैक्स के प्रोविजंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, या फिर कंप्लीट नॉलेज ना होने की वजह से यू आर नॉट कंप्लाइंग विद एडवांस टैक्स प्रोविजंस एंड पेइंग अननेसेसरी इंटरेस्ट ऑन योर टैक्सेस? If yes and you want to know all about advanced tax provisions, then आपको हमारी बिजनेस एटीएम सीरीज को ध्यान से सुनना होगा, वो भी एंड तक। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा, फिर आप भी अपना एडवांस टैक्स सही से कैलकुलेट करके डिपॉजिट कर पाएंगे एंड अननेसेसरी इंटरेस्ट पे करने से भी सेफ हो जाएंगे। मैं संगीता फ्रॉम टीम डिजी अकाउंटो अपनी इस बिजनेस एटीएम सीरीज में कवर करूंगी ऐसे बहुत से प्रोविजंस जो एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने एंड डिपॉजिट करने में हेल्पफुल होंगे, सच एज व्हाट इज एडवांस टैक्स, हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, व्हाट इज द ड्यू डेट of payment of advance tax, how it can be calculated, how we can pay it, what if we not paid or complying with advance tax provisions. So friends, we will discuss one by one. सबसे पहले what is advance tax? Friends, आप सभी अच्छे से जानते और समझते हैं कि गवर्नमेंट हमसे टू फॉर्म्स में टैक्स कलेक्ट करती है, one is direct tax and another is indirect tax. इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी पर्सन कहीं ना कहीं पे करते ही हैं, because it is collected with the consumption of any good or services. We are subjected with indirect tax such as GST, excise, VAT, custom, etc. It is indirect because the person who actually paying it is not aware about what amount of tax he is paying to the government. Now, direct tax is collected by government on the income of person earned in any previous year. मीन्स टू से एक पर्सन जो भी अर्न करता है किसी भी ईयर में, उसको उस इनकम पर टैक्स पे करना होता है। दिस टैक्स इज कॉल्ड इनकम टैक्स एंड ये इनकम टैक्स ही डायरेक्ट टैक्स होता है, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट वी आर पेइंग टू गवर्नमेंट एंड इट इज डायरेक्टली पेड बाय पर्सन टू द गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, किसी ईयर में हम क्या अर्न करेंगे ये तो हमें ईयर एंड होने के बाद ही पता चलेगा। अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट को जो इनकम टैक्स से रेवेन्यू होने वाला है वो कहीं ना कहीं डेफर हो जाएगा, because of which government will not be able to run its welfare scheme and cannot comply other budgetary announcement due to non-availability of revenue on time. So government क्या करती है, वो इस मिलने वाले इनकम टैक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके एडवांस में ही पर्सन से कलेक्ट कर लेती है, so that funds can be reached to government at regular intervals and it will be easy for the government to run the show. इस एडवांस में कलेक्ट किए गए टैक्स को ही हम एडवांस टैक्स कहते हैं। फ्रेंड्स, एडवांस टैक्स के प्रोविजन को कंप्लाई करना एंड सही कैलकुलेशन और एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना बहुत ही जरूरी होता है। हम अपनी इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों है। अब हम अपने दूसरे प्रोविजन पर आते हैं, हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एवरी पर्सन irrespective of his residential status is liable to pay advance tax, except first, whose income tax liability in a year is below 10,000. Second, a resident whose age is 60 years or more at any time during the previous year and does not have any income chargeable under the head profit and gains for business and profession. Now, we will discuss due dates for payment of advance tax. Friends, government advance tax को 4 parts में collect करती है, means one due date for every quarter. So 4 due dates in a year. According to due date, income tax का एक फिक्स परसेंट पर्सन को डिपॉजिट करना होता है। ये परसेंटेज लास्ट ड्यू डेट तक 100% हो जाता है। अकॉर्डिंगली ड्यू डेट विद देयर फिक्स परसेंटेज आर एज फॉलोज। ड्यू डेट को गवर्नमेंट ने 4 पीरियड्स में डिवाइड किया है सो दैट गवर्नमेंट कैन गेट रेवेन्यू एट रेगुलर इंटरवल्स। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्वार्टर 1 के जून मंथ में 15 जून को ड्यू हो जाएगी। इस इंस्टॉलमेंट में आपको टोटल एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का 15% डिपॉजिट करना होगा। आफ्टर दैट सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी क्वार्टर 2 के सितंबर मंथ में 15 सितंबर को। इस डेट तक आपके एस्टिमेटेड लायबिलिटी का टोटल 45% टैक्स एडवांस टैक्स की फॉर्म में डिपॉजिट करना होगा। मींस टू से ऑन दिस ड्यू डेट you have to pay additional 30% of your total estimated tax liability if you already paid 15% in your first installment. Accordingly, third installment will be due on 15th of December.
up to which you have to pay total 75% of your estimated tax liability. Means additional 30% in this installment. And fourth or last installment will be due on 15th March, up to which आपको 100% तक टैक्स डिपॉजिट करना होगा. फ्रेंड्स, अब यहाँ कुछ और बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, सच एज ऐसे पर्सन जो अपनी इनकम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अकॉर्डिंग फाइल करते हैं. मींस पर्सन फाइलिंग ITR अंडर सेक्शन 44 AD और सेक्शन 44 ADA is not liable to follow set 4 installments to discharge their advance tax liability. उनको अपना 100% टैक्स एडवांस टैक्स की फॉर्म में ऑन और बिफोर 15th of March तक डिपॉजिट करना होगा. Means to say they can pay their advance tax in single installment, but on or before 15th of March of the previous year. Second, in case of income from capital gain or any other income such as lottery income, income from sale of crypto, income from winning from game show, etc., full income tax will be deposited as an advance tax in the same month in which this income is earned. Example के लिए, if a person sells its land in the month of September and gets income, on this income there is tax liability of rupees 1 lakh, then उस पर्सन को ये 1 लाख रुपए की फुल टैक्स लायबिलिटी अपनी सितंबर मंथ की एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट के साथ ही डिपॉजिट करनी होगी. नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू कंप्यूट एडवांस टैक्स. एक्चुअल इनकम का पता तो किसी भी पर्सन को ईयर कंप्लीट होने के बाद ही लग पाएगा, बट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एडवांस टैक्स गवर्नमेंट पर्सन को करंट ईयर में होने वाली अपनी सभी इनकम को एडवांस में ही एस्टिमेट करके एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहती है. अब उस पर्सन को अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग ही एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करनी पड़ती है. यहाँ एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट करते हुए ये ध्यान रखना होगा कि करंट ईयर में होने वाली सभी इनकम इस एस्टिमेशन का पार्ट बन जाए. अगर कोई भी इनकम एस्टिमेटेड इनकम का पार्ट नहीं बन पाती या फिर ईयर के किसी भी मंथ में ऐसी कोई इनकम होती है जो आपने एस्टिमेट नहीं की थी, तो आपको अपनी एडवांस टैक्स की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में इसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ये इंटरेस्ट क्या होगा और कितना होगा, ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे. आइए अब हम एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन को कुछ एग्जांपल समझते हैं. फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑल कैलकुलेशन विल बी डन अकॉर्डिंग टू ओल्ड टैक्स स्कीम. एग्जांपल 1, Mr. Garg estimated its income for financial year 2022-23 rupees 20 lakh. According to old income tax slab rate, estimated tax liability comes to 4,29,000. Now we need to advise Mr. Garg what will be the advance tax installment amount for financial year 2022 to 2023. इसका सॉल्यूशन ये होगा, जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी 15th of June 2022 को. इस इंस्टॉलमेंट में मिस्टर गर्ग को अपनी टोटल एस्टिमेटेड लायबिलिटी जो कि 4,29,000 है, इसका 15% जो होगा 64,350 रुपीज पे करना होगा. सेकेंड इंस्टॉलमेंट दैट इज ऑन 15th of September. इस पर मिस्टर गर्ग को अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का टोटल 45% डिपॉजिट करना होगा. 45% होता है रुपीज 1,93,050 रुपीज, out of which Mr. Garg has already paid 64,350 rupees in his first installment. So additional rupees 1,28,700 would be payable in the second installment. Third installment जो कि ड्यू होगी 15th of December को, उस पर Mr. Garg will liable to deposit 75% of its tax liability in the form of advance tax, out of which he has already paid 45% of its tax liability, that is 15% in the first quarter and 30% in the second quarter. So additionally, Mr. Garg will pay 30% of tax liability in his third installment, that is 1,28,700. In fourth installment, that is on 15th of March, Mr. Garg will have to pay his full tax liability, that is total 4,29,000, out of which he has already paid 3,21,750 rupees. So balance rupees 1,07,250 he has to pay on 15th of March. चलिए इसको थोड़ा और अच्छे समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं. Mr. Reshu estimated its income for financial year 2022 to 2023. Income है 15 लाख रुपए. According to old tax slab rate, estimated tax liability comes to rupees 2,73,000 on estimated income of rupees 15 lakh. Now,
On 10th of September, Mr. Reshu sell its residential house on which he earns long-term capital gain of rupees 1,50,000. And on 5th of December 2022, Mr. Reshu gets rupees 1 lakh as prize money from a game show. Now we need to advise Mr. Reshu what will be the advance tax installment amount for financial year 2022 to 2023. As you can see in the table, first installment ड्यू होगी 15th जून को. इस इंस्टॉलमेंट में मिस्टर रेशू को अपने टोटल एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी दैट इज ₹2,73,000 का 15% 40,950 रुपीज पे करना होगा. सेकेंड इंस्टॉलमेंट दैट इज ऑन 15th ऑफ सितंबर, मिस्टर रेशू को अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का टोटल 45% डिपॉजिट कर देना होगा. 45% होता है 1,22,850 rupees, out of which Mr. Reshu has already paid rupees 40,950 rupees in his first installment. So additional rupees 81,900 would be payable in second installment. Now, on 10th of September, Mr. Reshu gets income in the form of long-term capital gain for rupees 1,50,000. On this income, tax would be payable 20% plus 4% cess, that is 31,200. Mr. Reshu has to deposit this total tax liability with his second installment. So total amount which would be payable in this second installment comes to 1,13,100 rupees. Third installment जिसकी ड्यू डेट होगी 15th of December, उस पर Mr. Reshu will be liable to deposit its 75% tax liability in the form of advance tax, out of which he has already paid 45% of its tax liability, that is 15% in the first and 30% in the second. So additionally, Mr. Reshu will pay 30% of the tax liability in his third installment of rupees 81,900 rupees. Now, on 5th of December, Mr. Reshu gets income in the form of prize money from a game show for rupees 1 lakh. On this income, tax would be payable 30% plus 4% cess, that is 31,200. Mr. Reshu has to deposit this total tax liability with his third installment. So total amount payable which would be payable in the third installment comes to 1,13,100 rupees. Now in the fourth installment, that is on 15th of March, Mr. Reshu will have to pay his full tax liability, that is total 2,73,000, out of which he has already paid 2,04,750. So the balance, that is 68,250, he has to pay on 15th of March. Now we will know how to pay advance tax. Advance tax can be paid through online facility by submitting the details in चालान number 280. अब आप भी सोच रहे होंगे कि क्या हो यदि हम एडवांस टैक्स डिपॉजिट ना करें. क्या कोई इंटरेस्ट और पेनल्टी प्रोविजन एक्ट में प्रोवाइड किए गए हैं और गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है इफ वी डू नॉट कंप्लाई विद एडवांस टैक्स प्रोविजंस. सो फ्रेंड्स, श्योर देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज. आइए देखते हैं consequences of default in payment of advance tax. If a person does not comply with provisions of advance tax and does not deposit advance tax installments on time, then interest under section 234B and 234C will be charged. And friends, interest rate होगा 1% per month for tax liability not paid. First हम section 234C को समझते हैं. Under section 234C, 1% monthly interest will be charged in case of default in payment of advance tax installment by a person. Interest under section 234C will be charged up to March month of the financial year only. If any tax is still payable, then section 234B will come in the picture. Section 234B we will see after section 234C. Calculation को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं. Miss Sangeeta needs to pay advance tax installment amount calculated on the basis of estimated tax liability of rupees 2,08,000 for financial year 22-23. She paid advance tax as follows. On 15th of June, 20,000. 15th of September, 73,600. 15th of March, 1,14,400. What would be the interest under section 234C if she filed her ITR on or before due date? As we can see in the table, first installment which was due on 15th of June for rupees 31,200, against which Miss Sangeeta has paid only 20,000. So Miss Sangeeta ने 11,200 short advance tax pay किया है.
So interest will be applicable under section 234C on this 11,200 at the rate 1% for 3 months, which comes to rupees 336. Now, up to 15th of September, Miss Sangeeta was required to pay total advance tax for rupees 93,600, out of which she has paid 20,000 in her first installment and balance 73,600 in her second installment. So now there is no shortfall, so no interest under section 234C. Miss Sangeeta has not paid her third installment due on 15th of December, while she was required to pay rupees 1,56,000 as advance tax up to this date, against which she has paid only 93,600 in first and second installments. So there is a shortfall for rupees 62,400, on which interest under section 234C will be applicable at the rate 1% for 3 months, which comes to rupees 1,872. In her fourth installment, she had paid her full tax liability, so no interest under section 234C will be charged. So Miss Sangeeta has to pay total interest of rupees 2,208 under section 234C. Now come to section 234B. According to section 234B, if a person pay advance tax in a particular financial year and it is less than 90% of his total tax liability, then that person would be liable to pay interest under section 234B at the rate 1% per month from 1st April for the following such financial year till the date of deposit of total tax liability. इसको एग्जाम्पल समझते हैं. मिस अदिति नीड्स टू पे एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन हर बेसिक एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी of rupees 2,08,000 for financial year 22-23. She paid advance tax as follows: on 15th of June 20,000, 15th September 20,000, and on 15th of March 50,000. What would be the interest under section 234C and 234B if she filed her ITR on or before due date and deposit the balance tax on the date of filing of ITR, that is 31st of July 2023. As we can see in the table, first installment, which was due on 15th of June for rupees 31,200, against which Miss Aditi has paid only 20,000. So Miss Aditi ने 11,200 short advance tax pay किया है. So interest will be applicable under section 234C on this 11,200 at the rate 1% for 3 months, which comes to 336 rupees. Now, up to 15th of September, Miss Aditi was required to pay total advance tax for rupees 93,600, out of which she had paid only 20,000 in her first installment and 20,000 in the second installment. So now there is a shortfall for rupees 53,600. Interest will be applicable under section 234C on this 53,600 at the rate 1% for 3 months, which comes to 1,608 rupees. Miss Aditi has not paid her third installment due on 15th of December 2022, while she was required to pay 1,56,000 as advance tax up to this date, against which she has paid only 40,000 in the first and second installment. So there is a shortfall of rupees 1,16,000 on which interest under section 234C will be applicable at the rate 1% for 3 months, which comes to 3,480 rupees. In her fourth installment, she was required to pay her full tax liability of 2,08,000, out of which she has already paid rupees 90,000. That is 20,000 in her first installment, 20,000 in her second installment, and 50,000 in her fourth installment. Accordingly, there is a shortfall of rupees 1,18,000 on which interest under section 234C will be applicable at the rate 1% for 1 month, which comes to rupees 1,180 rupees. So Miss Aditi has to pay total interest of rupees 6,604 under section 234C. Calculation of interest under section 234B. Total tax payable after 31st March is rupees 1,18,000, which was paid on 31st of July, that is with ITR. So interest under section 234B will be charged for 4 months, that is from April 2023 to July 2023. So interest under section 234B comes to 4,720 rupees. So friends, आपने देखा कैसे एडवांस टैक्स के प्रोविजन का
एक नॉन कंप्लायंस हैवी इंटरेस्ट का रीजन बन सकता है। इसके अलावा इफ इनकम टैक्स ऑफिसर डीम्स फिट दैट पर्सन is need to pay the advance tax, then he may serve demand notice to such person in Form 20 requiring him to pay the advance tax. इस केस में उस पर्सन को एडवांस टैक्स पे करना होगा एंड इफ ही डज नॉट पे द एडवांस टैक्स, इन दैट केस द पर्सन इज डीम्ड टू बी assessed in default. Means to say penalty proceedings can be initiated against that person. So friends, advance tax की सही कैलकुलेशन एंड सही इंस्टॉलमेंट में उसको डिपॉजिट करना बहुत जरूरी है। Otherwise, it leads to unnecessary litigations between person and income tax department. हम आशा करते हैं कि आपके मन में आने वाले हर क्वेश्चन का आंसर हमारे इस वीडियो में मिल गया होगा। फिर भी in case of any further query or clarification, you may comment your query in the comment section. We will try to provide suitable answer for the same. So friends, keep watching and listening our business ATM series. We at Digi Accounto will always try to cover topics like this, which will really be helpful for all of you. Choose Digi, karo compliance easy. Choose Digi Accounto as your compliance partner as we are accurate, professional and cost effective. Please like, share and subscribe us at social media platforms. Thank you friends. Thank you so much.